Hello, students of Standard 9. Here I am Sambre. In second video, we have to learn the next steps of whatever we have learned in first video. So in previous video, we have learned definition of set, methods of writing sets, types of sets, and depending the two exercises. So have you completed the exercise 1.1 and 1.2 in your registers? I hope so. Now next topic is Venn diagram. Now what is Venn diagram? Now exactly meaning of Venn diagram is what? Okay. So definition. The geometrical figures now exactly which are these? Circle, square, rectangle or ellipse, which are used to represent the set are called Venn diagram. Means this definition is not so specific. The diagrams which are circle, square, rectangle and ellipse. Ellipse, do you know? Ellipse means this type of oval is called as ellipse. But most of the students prefer to draw circle and rectangle or square. Okay. Now these diagrams which are used to represent the set are called Venn diagram. Means exactly Venn was the mathematician who has defined this term, that is Venn diagram. Okay. Now example. Suppose set A consists of 2, 4, 6, 8 and so on. So you may use circle. You have to draw the circle by using instrument, means divider. Okay. Then in this circle we have to write 2, 4, 6, 8 anywhere. Yeah? And then near the circle you may write A, capital A, outside of circle or inside of circle. That is the set A. It is the representation. So understand? Okay. Then next definition is subset. Second, subset. Okay. Now what is meant by subset? If A and B are two sets and every element of set B is element of set A also, then set B is called subset of set A. अंडरस्टैंड? अगर दो सेट्स ए और बी होंगे, आर टू सेट्स, एंड हर एक एलिमेंट किसका? सेट बी का अगर किस में आता है, ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन सेट बी इज कॉल्ड एज अ सबसेट ऑफ ए. Now for example, we may clear it. So in example, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B is equal to 2, 4, 6. Now see what will happen here. Every element of B means 2, 4, 6.
also belongs to set A. Correct? Means these two sets are satisfying this definition. Understand? Every element of set B 2, 4, 6 is element of set A 2, 4, 6. And therefore, according to definition, we may say that A subset of B subset of A. Correct? Now this is the symbol for subset. How will you read? It is read as A is the subset of B is the subset of A or B subset A, simply. Understand? Now here remember that A not subset of B. Now why? Because it fails the definition of subset. Now what is that? Every element of B. Now it becomes every element of A, means 1, 2, 3, 4, 5, 6 are also elements of B. It is not happening here. Correct? Means 1 is not in B, then 3 is not, 5 is not. Therefore, according to definition, A is not a subset of B because A समझ में आ रहा, नॉट मीन्स कट करते हैं उसके जैसे अपन नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं ना, तो इट इज़ रीड एज नॉट सबसेट ऑफ बी बिकॉज every element of set A is not element of set B. Understand? So this is the definition of subset. Now some properties are there, we have to remember that. Properties, or you may say it as notes. So you have to keep in mind, these are not very important but may be useful while thinking over it. ठीक है? पहला फर्स्ट इज A सबसेट ऑफ A. इसका मीनिंग एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही. अब इसमें डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है नहीं. देखो सपोज ए में जो भी एलिमेंट होंगे तो उसमें तो रहने वाले, ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस. देन सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 5 मीन्स एम्प्टी सेट. ही इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एनी सेट, नॉट ओनली एनी सेट. ठीक है, सो आप ध्यान में रख सकते हो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट. ये रिमेंबर, ये ध्यान में रखना. एम्प्टी सेट is subset of any set is important. ठीक है. third one is if A is equal to B, means two sets are suppose equal, then what it mean? इसका मीनिंग होता है A subset of B and B also subset of A. इज द मीनिंग. अब डेफिनेशन अगर यूज़ करें तो आप यू कैन थिंक ओवर इट दैट ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ए के पूरे एलिमेंट्स और एवरी एलिमेंट्स इन बी, बी के एवरी एलिमेंट्स इन ए. ये तभी पॉसिबल है दो सेट में जब दोनों में इक्वल एलिमेंट्स होंगे तभी, है ना, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. और फोर्थ है उसका वाइस वर्सा, मीन्स अगर ऐसा सिचुएशन है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड B subset of A, then we can say that A must be equal to B. यानी दोनों प्रॉपर्टीज में आ जाती है. If A subset of B and दोनों ज़रूरी है पर B subset of A, then what we can say A is equal to B. ठीक है. So these are the definition and examples of subset. Now next is universal set. Now what is meant by universal set? Do you know universe? Universe means ब्रह्मांड. तो सेट के लैंग्वेज में भी होता है, जैसे हमारे फैमिली की लैंग्वेज में भी होता है. तो जैसे हमारी फैमिली है तो उसका ब्रह्मांड यानी क्या हो जाता है, पूरा खानदान, है ना, जिसको हम खानदान बोलते हैं. वो उसी टाइप से हमारा विश्व का जो है वो कहलाता है ब्रह्मांड. ब्रह्मांड है यूनिवर्स. ठीक है.
Now, in the language of set, what is universal set? ठीक है, तो इसका definition, if A, B, C are sets and A, B, C are subsets of other set, then that other set is called universal set. ठीक है, now how, remember, ठीक, now it is represented as, let me know, it is represented by capital U only. ठीक है, wherever there is a capital U in the language of set, we have to understand that it is a universal set. ठीक है, now let us take example, you will clear the definition. ठीक है, now definition understand, अगर 3 सेट या 4 सेट या 5 सेट अगर होंगे और एक सेट ऐसा होगा जिसके ये सभी के सभी सबसेट्स होंगे, तो ही उस बड़े वाले सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बाद में भी क्लियर करा दूंगा आपका, पहले न्यूमेरिकली ले लेते हैं. 1 2 3 4, देन B इज इक्वल टू 2 4 5 6, देन C में ले लेते हैं 6 7 8 9, और D में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. Now C, what's the definition says? A, B, C, these are the 3 sets and A, B, C are the subset of other set. अब ये तीनों D के subset है, यहाँ देख लो. Now every element of A 1 2 3 4 belongs to D 1 2 3 4. Every element of B 2 4 5 6 belongs to D set. ठीक है, 2 4 5 6, and every element of C 6 7 8 9 belongs to D 6 7 8 9. ठीक है, means A subset of D, B subset of D, C subset of D, and therefore, right, D is equal to what we can say, U, that is universal set. Clear हो गया definition? This is the definition of universal set. Clear? Then next definition is complement of set. कॉम्प्लीमेंट, अरे इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताना रह गया मेरा, मैं बता देता आपको. सेकंड एग्जांपल किसका, यूनिवर्सल सेट का. ठीक है, सो U इज इक्वल टू, इन द लैंग्वेज ऑफ नंबर ऑफ सेट्स या सेट्स ऑफ नंबर R, करेक्ट, बिकॉज, ठीक है, वाई. So first is set of natural number, subset of whole number, subset of integer, subset of cube means set of rational number, and subset of R. Correct? Means all these 1 2 3 4 are the subsets of only one, and therefore R is called as a universal set of all numbers. Clear? एक एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाता है. All natural number belongs to W, all whole number belongs to I, integers, all integers belongs to rational number, and all rational number belongs to real numbers. Therefore real number is the सबसे बड़ा set of which all these are the subsets. Then next is complement of set.
ठीक है, स्पेलिंग अगर मेरे अक्षर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो बुक देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन। अब इसके लिए एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, इफ़ ए सबसेट ऑफ यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना, भूलना मत। मीन्स टू राइट कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ एनी सेट वी मस्ट नो ए इज द सबसेट ऑफ यूनियन या यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ set A is the set of all elements of U. U means universal set, which do not belong to A is called, यह हो गया डेफिनेशन। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली, ये तो बहुत मस्ट है कंडीशन कि कोई भी सेट जिसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखने जा रहे हैं मस्ट बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी कौन सा सेट होता है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट के पूरे एलिमेंट्स, बट विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऐसे अपने को 2-3 बार अपने लैंग्वेज में दिमाग में उसको घुमा देना, एंड देन फ्रॉम एग्जाम्पल यू विल क्लियर द डेफिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। ठीक है, और यू इज इक्वल टू ले लेता मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज द कंडीशन। Firstly, we have to observe whether the condition is fulfilled or not. ठीक है, तो A subset of U means every element of A must be in U. तो all elements or every elements to belongs to U, 4, 6 और 8. ठीक है, means this condition is satisfied. A subset of U. Now we have to write complement of A. Complement of A. Now see. According to definition, now it is represented at A dash. ठीक है, now which element should we have to include in this set? ठीक है, now so read the definition. The complement of set A is the set of all elements of U. means A complement लिखते वक्त we have to observe the set U. ठीक है, सभी यूनिवर्सल सेट के मुझे एलिमेंट्स लिखाने, बट कौन से, which do not belong to A। करेक्ट, अब ए में कौन से नहीं है, 1 नहीं है, तो ये हो गया 1। देन ए में कौन सा नहीं है, 3 नहीं है। देन ए में कौन सा नहीं है, 5 नहीं है। देन ए में कौन सा नहीं है, 9 नहीं है। क्लियर, अब देखो मैंने कौन से एलिमेंट लिखे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यू के लिखे, लेकिन जो ए में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो जो इंक्लूड है उसको छोड़ दिया, 1 ए में नहीं था, लिख लिया। देन 3 भी नहीं था, लिख लिया। 4 है, 5 भी नहीं था, लिख लिया। देन 6 भी है, 8 भी है, 9 नहीं है, वो भी लिख लिया। सो अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे सुन में, देन उसकी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, अपन नोट्स ध्यान में रखते कुछ। ठीक है, व्हाट आर द नोट्स। फर्स्ट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं रहता, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट आप ध्यान में रखना, इस डेफिनेशन को बार बार रिपीटेडली देखना, ऑब्जर्व करना, समझना। ठीक है, तभी ये नोट्स आपको समझ में आएंगे। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट हैज़ नो कॉमन एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं ऊपर के एग्जाम्पल में, ये ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो उसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन सेकंड, ए यूनियन, ये सबसेट ऑफ यू। देन ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ यू, ये भी आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। ए सबसेट ऑफ यू तो हमने पहले देखा, एवरी एलिमेंट है। अब
ये भी होता है या नहीं देख लो, और एवरी एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑल दिस बिलोंग्स टू यू। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड, नो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू मीन्स यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ये हरदम होता है एम्प्टी सेट। अब ये कैसा, अब यूनिवर्सल सेट ये हो गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना है हमें डेफिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू यू। बराबर ऐसे ही होगा ना, क्योंकि हम लिखने जा रहे हैं यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू बराबर विच डू नॉट बिलोंग्स टू यू, पॉसिबल नहीं, इसलिए कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और फोर्थ, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ये हरदम यूनिवर्सल सेट होता है। उसका एग्जांपल समझो, ए के जगह पे हमने ले लिया कॉम्प्लीमेंट यानी एम्प्टी सेट, तो हो गया। डेफिनेशन देखो, ए सबसेट ऑफ यू, यू का हो गया, आगे समझ, ए सबसेट ऑफ यू। अब ए सबसेट की प्रॉपर्टी देख लेना, उसमें लिखा है हमने कि एवरी सेट इज एम्प्टी सेट इज एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। सो ये ए यू का सबसेट हो गया। अब मुझे लिखना है फाई कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स फाई कॉम्प्लीमेंट, तो मैं उसमें क्या लिखूँगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यानी पूरे लिखने पड़ेंगे, मीन्स ऑल 1 to लेके 9 तक के, तो ये बन जाता फिर, अंडरस्टैंड। अच्छा, तो ये इतनी डेफिनेशन पे डिपेंड यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रिपीटेडली पूरे वीडियो देखो, ठीक है, उसको समझो, ठीक है, रिपीटेडली बार बार देखते, जो पोर्शन अपने को नहीं समझा उसको आप बार बार देख सकते हो, और फिर ट्राई फॉर द एक्सरसाइज। थैंक यू।